सबसे पहली चीज अगेन आई मेंशन DML, दिमाग मत लगाओ, जाओ चेक द KGMM राइट अवे, ठीक है। 3 दिन का इवेंट। Hi guys, welcome to another case study, and this time we have Piyush Agrawal with us as Himanshu Agrawal, you know. This time Piyush Agrawal, and he's a digital marketing agency owner, has got to 5 lakhs in revenue, 1.5 lakhs cash collected out of that, 350,000 in pipeline in just 15 days. And Piyush was a person who was struggling for at least 5 to 6 months to onboard a single client, and then he onboarded 3 clients back to back to back with 350,000 in pipeline in just 15 days. So we are going to understand हुआ कैसे भाई ये, what's the magic, and how you can apply these same things into your business and take your business as well to the next level. So keep on watching this video because a lot of nuggets are coming on your way. Before we move forward, welcome Piyush, welcome to the Kingdom Club winners. I still remember the same background, same everything. You were in the KGMM, then you were in ICEx, and now we are sitting over here with the case study. Just a brief background of who Piyush is, what do you do, and a little bit about Okay, yourself. sure. Hi guys, my name is Piyush. I'm 23 years old right now. Okay, I run a performance marketing agency called SocioEase, and sorry, this has been something that I was very passionate about. Right after I left my job, just after 3 months, कि भाई मेरे को खुद का कुछ करना है, and I wanted to do this right after that. And I started this in the month of April last year, 2023, and right now it's Jan, and I'm really happy with the results I'm getting in on board. Okay, and इसके अलावा I'm a digital marketer by profession. I've been doing social media marketing, performance marketing for last 4 years, and right now we are at this stage. Lovely, super awesome. So you started in April 2023, and right now we're sitting in Jan Yes, 2024. So that's how the roller coaster has been. exactly. Awesome. Um, what has been your life before ICE? Like before joining ICE, what was it? And a premier question to that, what was your why behind this? Like, because as I know your story, from April to October, you're stuck and you can quit that business because no clients for 6 months. When no one results, they're like, "Bhai, isko chodo." But you Exactly. stick around. So what was your why behind that? And So, yeah, huh, please sorry, go I ahead. cut you off quickly. No, no, please go. So, basically, for April to October, the whole thing was I used to join in webinars. Okay, I used to punch in people. I need to join courses, learn how to get clients and all. Because, देखो, as what was the thing was I knew how to sell. Okay, I had a good experience of selling things because I did a lot of internship and I had a previous experience from a job that how to sell product. I knew how to sell. I sold almost worth of goods of 2.5 lakhs in a month of lockdown in 2020. When people were not making earning, I made a sale. So I knew I can sell people. Okay. But now the problem was to reach out to people and to tell them that, hey, I can help you out with this thing was the major issue for me. Okay. And to do that, I was very confused for the whole 6 months, 7 months. I was not getting clarity, but I knew one thing that I shouldn't quit. दैट एटीट्यूड आई रियली हैड कि मेरे को क्विट नहीं करना है कुछ भी हो जाए. ओके, Okay. एंड दैट इज हाउ आई हैड दिस वाइब कि कुछ भी हो जाए भाई ये करना है, क्योंकि घर वालों को बोल दिया था कि आई प्रूव यू व्हाट आई कैन डू बाय मंथ ऑफ मार्च. एंड वो डेडलाइन थी मेरे दिमाग में कि दिस वाज टिकिंग ऑलवेज. एंड अगर वो प्रूव नहीं करता तो आई वाज आस्क्ड टू जॉइन इन द फैमिली बिजनेस. लाइक आई डोंट वांट टू डू दैट क्योंकि मेरे को यही चीज करनी है एंड आई नो द पोटेंशियल ऑफ इट. आई न्यू द पोटेंशियल एंड आई वाज लाइक नहीं यही करना है, यही करना है, यही करना है. So your why of this business is not joining family business. That My was way like, of no, my way of doing this business is because I knew the potential of this. okay, makes sense. Okay, because the thing is, digital marketing as in whole, हम लोग जो era देख रहे हैं, ठीक है, it has been always booming, and I predict this that it is going to be a $300 billion economy in coming years. Okay, this is what the study says. And even if I be a part of it right now and I struggle a little bit in the beginning, I know what kind of profits or maybe what kind of empire I can create in the Makes future. sense. Smart. एंड वो फ्यूचर में एम्पायर क्रिएट करना इज व्हाट सर्विस बिजनेस और मे बी अ SaaS बिजनेस एक्सेट्रा. SaaS Hmm, वगैरह में तो वो नहीं भाई, सर्विस में हो तो सर्विस में करेंगे. hmm, hmm, क्योंकि आज तक प्रोडक्ट बिजनेस में कैसा रहा है, यू डू अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ थिंग, एंड hmm, माय फैमिली बिजनेस बेसिकली एक ट्रेडिंग बिजनेस हो गया एंड hmm, आई नो टू डू दैट, इट टेक्स टाइम. hmm. या, and that was the why ki I want to create an impact. I want to go huge in this business and create an empire for myself and my family. Got it. Got it. How was life before ICE? Like from April to October, November. Sorry. Sorry. So April to November, it was a real roller coaster. Every month I used to struggle on board one client. ठीक है, हर month reach out कर रहा हूँ. ठीक है,
वो एक क्लाइंट कॉल पे आई कुड शो माई डेस्परेशन, द क्लाइंट कुड सी द डेस्परेशन कि इस बंदे को क्लाइंट चाहिए, एंड उस चक्कर में आई यूज टू बज आउट माई प्राइजेस। अगर वो बोले कि भाई 30,000 से तू 15,000 पे, आई यूज टू कम एट 15,000। बट नाउ द सीन इज कि नहीं, नो, आपको नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, Hmm. बट नॉट टुडे। So, you know, Apple's remember you're struggling. अभी सही है life. If हाँ you would advise that पुराना वाला Piyush हाँ, one thing, what would you advise? कि पीयूष देखो, यू हैड द राइट माइंडसेट, ठीक है, यू जस्ट नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ क्या कहते हैं, राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स द वर्क, Hmm. एंड यू गॉट दैट डायरेक्शन विद हिमांशु। अगर वो तू खुद अप्रैल में कर लेता ना, यू कुड हैव बीन एटलीस्ट ऑन मे बी 15-20 lakhs राइट नाउ। Got it. So basically you are putting the work, but the only thing was direction missing था. मतलब किस direction भाग रहे वो गलत है. हाँ, हम लोग मतलब आई वॉज रनिंग ऑल डायरेक्शंस, Hmm. ठीक है, मतलब मैं यहाँ भाग रहा हूँ, वहां भाग रहा हूँ, मतलब Hmm. कोई भी क्लाइंट मिल रहा है, कोई भी नीश पकड़ रहा है, सब में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन पकड़ लिया उसी चीज में भागो, नहीं, आई एम शूटिंग एरोज इन द नाइट, इन द जो डार्क। चल गया. जो चाहिए चलिए, जो चल गया चल गया, क्या पता। Hmm. Got it. That was very wrong. Right now we have completely shifted socials into just performance marketing, की performance marketing पकड़ो, and उसके बाद जो niche out करना है, मतलब तुम्हें upsell side sell करना है कर लो, but main core performance marketing ही है, Hmm. बस। Hmm. Makes जैसे sense. वेबसाइट जैसे आ गया upsell के लिए, that is a separate business. I know I have a guy with me who can do websites, so I can do that upsell. But ऐसा नहीं कि हम वेबसाइट भी बेच रहे हैं, हम सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, नहीं, हमारा कोर यही है, हमारा कोर परफॉर्मेंस है, देन फुल फनल है। Hmm. इट Hmm. इज एन अपसेल टू द फुल फनल, बस। Got it. Got it. Makes sense. What was your first impression about me and how did you find us? To be honest, you were very frank and very open with the class. Okay, I remember the 3 hour AI funnel workshop, and you were like, "Are you dead people? Get up!" Mhm. Mind blow one. You were Hmm. like, Hmm. Hmm. this was the kind of interaction I needed, because what happens in the 3 hour workshop, usually लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एंड दैट वाज रियली इंटरेक्टिव अबाउट यू, एंड यू वर गिविंग एक्चुअल फुल पैक्ड वैल्यू ऑफ दैट वर्थ, और मे बी मोर देन दैट भाई। अगर मैं बोलूं एज अ बनिया, आई टेल यू, ठीक है, मेरे को 300 रुपये वसूल हुए, पक्के हुए, उससे ज्यादा ही हुए बल्कि, Hmm. ठीक है। Hmm. आई गॉट दैट कोर्स का रिकॉर्डिंग एज वेल एज क्या कहते हैं बाकी सारी चीजें। आई कंप्लीटली गॉट द वर्थ ऑफ मनी व्हाट आई पेड फॉर, एंड आई अंडरस्टूड अ न्यू काइंड ऑफ थिंग जो नहीं चल रही है मार्केट में। Makes Okay, sense. nobody is doing it because of that, and Hmm. that is really 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 nice. Hmm. And I completely agree कि anyone watching this should go and get, if you have not taken the AI funnel workshop right now, Got it. Makes sense. ठीक Makes है, sense. बिकॉज उधर से ना मेरे को पता चला कि यस, वैल्यू है, नॉलेज है, सब कुछ है। नाउ व्हाट इज देयर फॉर मी इन, ठीक है, वेयर कैन आई गो अहेड इफ आई टेक इन अहेड, दैट इज व्हेन आई थॉट ऑफ गेटिंग केजीएम। Hmm. केजीएम में गया, एंड देन आई सॉ दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, दैट होल फ्रॉम फ्री। I think you got your results in 3 days only. One Yeah, result, if I'm not wrong. हाँ. I got the high ticket sales script वाला हाँ. thing from हाँ. there, and I हाँ. closed the client। वहां पे 2 क्लाइंट मैंने ऐसे ही क्लोज कर दिए हाँ. थे, ठीक कितने है। के क्लोज किए थे आपने केजीएम में? मैंने तब 75,000 कर दिए थे, सो 3 डे में ही आपने 75,000 अपना निकाल लिया कर 3 दिया दिन था। के अंदर ही. यस, हम्म. बिकॉज आई हैड द क्लाइंट, मतलब मेरे पास लीड्स रीच आउट हो गए थे, आई हम्म. हैड रीच्ड आउट, मेरे को हम्म. सिर्फ स्क्रिप्ट यूज करना था, आई यूज दैट स्क्रिप्ट एंड आई क्लोज द क्लाइंट्स। हम्म. मैंने मेक सेंस. 3 क्लाइंट क्लोज किए थे, उसमें से 2 रिटेन करके एक नहीं करा, एनीवेज। सो आई हैड एटलीस्ट मेड 75 दैट टाइम, दैट एग्जैक्ट डे, सेकेंड डे आई मेड 75K। क्रेजी क्रेजी. लव इट. या सो योर 2910 वसूल्ड वट यू पेड फॉर केजीएम में उसका 10 गुना पैसा तो वही बना लिया. सो इट वाज लाइक फॉर यू इट वाज लाइक भाई सही डायरेक्शन अभी डायरेक्शन मिल चुका है अपने को. मेक yeah, सेंस. I got the direction, I got the value out of it, and then I was like, nahi, now I can take the ICEx program as well. मेक सेंस. तो एक बात बताओ यार, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद एक अंदर से चेंज के लिए व्हेन समवन आस्क्स यू टू चेंज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट थिंग्स यू चेंज, लाइक 3 4 टॉप थिंग्स दैट यू चेंज इन द बिजनेस ड्यू टू व्हिच इट skyrocketed. नंबर 2, हाउ वर यू फीलिंग व्हेन यू वर गोइंग थ्रू द चेंज? इज इट एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और boredom? Like what was the experience? Okay. To begin with, first of all, I was not running ads for the agency. ठीक है, I Hmm. was just doing cold outreach में। ऑर्गेनिक वाला बंदा था भाई बहुत ज्यादा, कि ऑर्गेनिक करेंगे क्योंकि अपने Hmm. पास उतने फंड्स नहीं है, तो Hmm. सिंपल। बट देन आई अंडरस्टैंड अ लॉ, कि जितना खर्च करोगे उतना आएगा, ठीक है। इफ यू Put $1 स्पेंड, in to get $2 out. या इफ यू स्पेंड मनी यू मेक मनी, सिंपल थिंग। एंड दैट इज व्हेन इट हिट मी कि यार पीयूष एड्स चला, Hmm. ठीक है, लेट्स सी व्हाटएवर जो भी रिजल्ट्स आएगा देखा जाएगा, तो And the best part is you two start ads with like 200 per day.
as I mentioned. एग्जैक्टली इतना भी नहीं लगाना। Hmm. तो देखो, Hmm. चल तू 3,000 या 10,000 के ऐड चलेगा महीने के मैक्स, यू Hmm. मेक आउट ऑफ इट ना, चला रहा है, करो। Hmm. दिस वाज अ सिंपल एंड गोइंग थ्रू द चेंज, दैट वाज एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल एज नर्वस। ठीक है कि ऐड चला रहा हूँ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट आई रन एड्स फॉर पीपल, बट खुद के लिए चलाना इज ऑलवेज अ Correct. थिंक यार, आर यू डूइंग इट राइट और नॉट। Hmm. तो Hmm. तुम दूसरों के लिए चला लोगे बट खुद के लिए एक बार लगता है, बट देन इट वाज अ फन एक्साइटमेंट फॉर मी कि हाँ काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, Hmm. एंड दैट वाज रियली नाइस. Second thing that comes on the point when you ask me after doing so much changing a thing, I was always open for new things in my life. Okay, I'll be honest. Whenever a person gave me an advice, I made sure that I take the right part of it. Hmm. ठीक है कि जितना करना चाहिए सही है, मतलब दिमाग मत लगाओ वाला सीन जो आपने बताया था कि दिमाग मत लगाओ। Hmm. ठीक है, आई बिलीव अगर आप बोल रहे हो आउट ऑफ रनिंग सो मच, आप अगर बोल रहे हो कुछ चीज बिकॉज इट इज वर्क, इट इज ऐसे नहीं कि बस प्रूवन रिजल्ट्स नहीं है बस कह रहे हैं, नहीं। Hmm. कुछ रीजंस है, कुछ प्रूफ्स है, कुछ रिजल्ट्स है जिसके पीछे हम लोग को बैक कर रहे हैं, दैट इज व्हेन यू आर सेइंग इट एंड आई लाइक ठीक है चलो करो, ओके ज्यादा दिमाग मत लगाओ करो, एंड दैट वाज द सिंपल एटीट्यूड आई हैड देयर एंड Hmm. इट वर्कड आउट. आई Hmm. लाइक works Hmm. Hmm. sorted, and I'll focus on this for the coming month as well and the coming years as well, ki how can I scale up on things. Lovely. What were your like favorite tools and templates till now from ICEx? I'll tell you, first was a stomp. Hmm. Okay, that was like a mind-blowing template then. Okay, then the funnel whole funnel thing, what you have thought in. Okay, that was like a crazy thing. I mean, if I get a chance, I would use that for my clients as well. Ki Hmm. bhai, you use this will help out Hmm. for you. Hmm. Okay, I'll do that. Apart from that, all the AI tools, the 50 AI tools that you gave in, सबसे पहले mail jar. Okay, that in fact that is I guess yours only. Yeah, Mail that's jar mine. आपका ही है. And that has been a crazy thing. I can scrape data so easily and do everything that I want. Uh, उसके अलावा then there was this. Wait, I'll tell you. The high ticket sales script again. Okay, coming back to it because that has been really performing well for me. So I'll take it. Objection handling again a crazy thing जहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि we haven't started yet. How Hmm. can I tell you? Hmm. And that The is step like by step objection handling framework. exactly, and that has been best ever research. Apart from that, all of the things coming in the program of ICEx, जो कि है Minds of like Millionaires, 30 30 laws of laws of millionaire. Bills. I'll tell you, I have been following दो चीजों से आज की डेट में। एक तो there's plenty of money. Second, make your bed. Hmm. ठीक है, मैं नहीं बनाता था पहले, आई हैव मेड एट घर पे, आई यूज्ड टू नेवर डू इट, बट देन नाउ आई एम लाइक नहीं, यू एटलीस्ट डू वन थिंग इन योर लाइफ प्रॉपर्ली। ठीक है, आई नीड टू स्टार्ट विद द अदर थिंग्स, बट यस दीज आर द टू थिंग्स एटलीस्ट आई फॉलो की there's plenty of money so you ask money for it, and the thing is make your bed, and I follow that completely आज की डेट में. Super And awesome. slowly getting on other things as well, waking up early and One all. law at a time. One law at a time. Exactly. Waking up early is a thing कि यार मेरा schedule ऊपर नीचे हो जाता है, उस चक्कर में I can't. But I'm really trying hard to wake up at least around 8, 7:30 के आसपास. Got it. एक और बात बताओ कि नो क्लाइंट्स फिर एकदम से हाई टिकट क्लाइंट सीधा ऐसा भी नहीं तुमने 10,000 के क्लाइंट्स क्लोज करे हो लाइक यू आर सीधा लाइक 50,000 75,000 के क्लाइंट्स ये एकदम माइंडसेट चेंज कैसे हुआ लाइक हाउ डिड यू गॉट टू दैट माइंडसेट ऑफ आई कैन चार्ज हाई टिकट एंड पीपल विल पे हाई टिकट. So I'll tell you, this mindset was always there for me. ओके. Okay, ये चीज I started with a video editing thing back in the age. ठीक है, मैं जब 18 का हुआ था, I used to do video editing. ठीक है, तब से what happened was कि I used to charge basic, but then I was introduced to Upwork and all, जहाँ पे you can pay high up to $250 $500 per video. Okay, and I know कि यार देखो मेरी वर्थ कितनी है, I know that. लोग दे तो रहे. लोगों को नहीं पता है, अभी लोग मिल नहीं रहे बस, बट मेरे को मेरी वर्थ पता थी कि आई नो मेरी वर्थ. तो आई नो हाउ कैन आई चार्ज, बट वो ये है कि उसको कैसे पिच करना है या कैसे दिखाना है कि मेरी वर्थ वो लगे कि दिस इज वैल्यूएबल इनफ और Got दिस इज it. कंप्लीटिंग द वर्थ. So you had the mindset, but the positioning of Piyush was not on that level where you can charge that amount. Now positioning यस has changed. यस, एंड आईसेक्स हेल्प मी देयर कि वो पोजीशन कैसे ला सकते हो तुम, Hmm. वो Hmm. पिच कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू शो योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट देयर. Hmm. Hmm. What changes have you done in your service to make it look high ticket? एक तो the pitch what goes in, there's a lot of content with regards to everything, basically market research आ गया, target audience finding आ गया, different set of campaigns. Usually what happens I've seen in the industry कि they work on the set of campaigns कि हम इतने set of campaigns पे काम करेंगे, अरे नहीं,
मैं रिजल्ट्स पे काम करूंगा। मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि मैं रिजल्ट्स लाके दूंगा तो मैं रिजल्ट्स पे काम करूंगा। मेरे को कैंपेन से मतलब नहीं कि मैं 50 कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ या मैं या दो एक करो। लॉन्च कर रहा हूँ। सिंपल। तो वो एक माइंडसेट मैंने उधर लोगों का चेंज किया कि देखो, मैं कैंपेन्स के नाम पे नहीं कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि 100 लीड ला के दूंगा, ठीक है, महीने की, तो 100 लीड ला के दूंगा हम्म, या उससे ओवर शूट करूंगा। हम्म, मैं कम नहीं करूंगा आपका काम। हम्म, हम्म, दिस वाज अ सिंपल थिंग, आई हम्म, गारंटीड रिजल्ट्स ओवर देयर, हम्म, कि हम्म, इतने रिजल्ट्स ला के मैं दे सकता हूँ एंड आई विल डू इट। हम्म, बट आप मेरे को टाइम दो, give me that space. हम्म, Okay. For example, if I tell them ki I can make your business three folds on the e-com business, which is easy. I know. Okay. I tell them, give me time, I'll get you 3x of what you're हम्म, spending. हम्म, And like, okay. This sounds promising. It's not like I'm going overboard on the results as well. Ki bhai maine 10x, 15x kara. No. हम्म, Do what is achievable. Be with smart goals. Basically, हम्म, smart goals की तरह मैंने उधर उसको ये किया, हम्म, position किया, हम्म, and I've showed them. understood. I've broken the service into smart, realistic, as well as achievable to people. And they're like, okay, this is achievable. This sounds good. And I have a killer portfolio right now. And I can use that portfolio to close anyone. Hmm. Makes sense. What changes you did in your sales process? Sales process, pehle, I used to randomly get anyone on call. Okay. Now a proper calendar link is sent with the pre-qualification data. ठीक है, कि नाम, नंबर, आपके कंपनी का वेबसाइट, व्हाट इज द काइंड ऑफ एमआरआर यू हैविंग, व्हाट इज द मार्केटिंग बजट, ओके, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस कॉल एग्जैक्टली, हाउ फास्ट आर यू, और हाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ एन इंटेंट, बेसिकली सारा चीज डिटेल लेता हूँ। एंड इफ इट इज क्वालिफाइंग माई ideal customer, okay, if they are having that budget, if they are looking to do it right now, maybe 4 months later, I don't have to get on call right now. Hmm. Okay, I can tell them कि hey, timelines are not matching. Maybe when you need it exactly, then maybe we can look for it. Got it. Okay. So that process has started up, and now I know कि whom to pick up to be on call with. Hmm. तो पहले 10 लोगों के साथ कॉल पे करते एक ही बंदा क्लोज होगा बिकॉज अनक्वालिफाइड था। आप 3 के साथ जाएंगे तो 3 क्लोज होंगे। Exactly. Out of 10, maybe 6 can get closed. चार Hmm. नहीं होंगे. Hmm. Got it. Got it. I know that. What was your happiest day after joining ICE? I'll tell you the second day of KGM first of all. ठीक So है, जब मैंने that is KGM. Like after हाँ, ICE, what was your I feeling? will tell you the first week of January has been crazy. Hmm. The first week of January, वो जब वो amount credit हो गया ना, वो deal close हुई, amount credit, I like, dude, I've killed it. Hmm. ये मैंने kill कर दिया. Nice, nice. And I've contacted Pragya right away after that. Ki, hey, listen, I've closed the client. Actually, congratulations. Hmm. Just for context for all the people, Pragya is the private business coach that we have given to Piyush. All ICEx participants have one private coach, and Pragya is of Piyush, so he's referring to her. Um, Now your money part is kind of sorted. Yeah, Pipeline में भी है, पैसा भी आ गया है, और clients भी आते जाएंगे. You'll increase your exactly. ad spends, all these things. What are you Exactly. working on right now? Like, what's the next plan? What's the next plan? The next plan is actually hitting a goal of maybe 20 lakhs a month. Hmm. Hmm. Okay, And that when is you the have set the first one. deadline? I've set a deadline for across April, May. Hmm. I need to hit that. Okay. For this month, I need to close around 7, 8 के आसपास. Once that is sorted, I'll go ahead with those timelines and maybe scale the agency in a way, at least at 30% growth per month onwards is what is planned. Makes sense. What So that's the plan you're going for. In IC community, the one thing that we focus on is not only the results we have got as owners, but also results that our clients and students are getting. What results your clients are getting? My clients are actually making good. Okay. So I'll tell you, uh, I had a client, okay, who was running a website design agency from Dubai. Okay, he spent a very basic amount of test with to begin with. Okay, he spent around 20,000 rupees in Indian INR to begin with. In 15 days, he got around like 60 leads. Okay, and he closed almost a worth of 1.5 lakhs out of those 60 Wow, leads. 6x was. Spent of just 20,000 rupees to Mm, test with, and now mm, he's my client for recurring basis. mm, That he knows what he's doing. So you have proved your worth with the work that you're doing. Exactly. And right Mm, now, I'm doing the same thing for other clients. got That it. if I promise, okay, so there was one more dermatology clinic that I was working with, Mm, and they had a budget of almost around 70,000 for us to spend on. mm, Okay, and I've given them a number of almost around 100, leads. mm. Okay, I hit that number within 25,000. Wow, So the CAC came in so low, and they were converting at the value of almost 20,000 rupees per session, easier. a Nice, 5% conversion rate. nice.
Nice, nice, nice. So it's like just get in a client for a very low amount, let them test, they'll see the results, and then they'll retain for long. Like that's the game plan. Exactly. I mean, expectations एकदम ऐसे रखो कि इतने पे आएगा, but then you over deliver on that कि भाई तुम्हारा cost per lead भी कम आ गया, and you're converting high ticket clients in that as well, and they are long term clients ऊपर से. Hmm, Sorted. got it. What else the clients want? What made I stand out for you? Because you said you have joined a lot of webinars and all of that, but Yeah, you know did not do anything. What made I stand out for you? Because I'll ice tell is you. expensive, right? Like very Exactly. expensive technically. So what made it stand out? So most of the times what used to happen, I'll tell you, Himanshu, the problem was कि uh, the person who was doing the webinar, right, he was not giving us value. Okay. And by what value I mean, for example, आपने ये दिया कि how to generate leads with AI. If this is the title of the webinar, and you tell me कि आप ये tools use करो, but अगर आप ये कोर्स खरीदोगे मेरा दूसरा वाला, तब आपको हम डिटेल्ड में देंगे. आई मीन, भाई तुमने पैसे लिए थे, Hmm. तुमने डिटेल में कुछ नहीं बताया, देन यू आर आस्किंग मी टू अपसेल. Hmm. एंड दैट वाज नॉट द केस विद अस, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, आपने अगर बोला कि ऐसे एआई से फनल बनेगा, या फिर आप इस तरह से लीड जनरेट कर सकते हैं, दिस इज हाउ यू ग्रो योर बिजनेस, आपने वो पूरा वैल्यू दिया है. Makes sense. ठीक है, यू आर नॉट सेड मी कि पीयूष यू बाय माय अदर कोर्स देन आई विल टीच यू हाउ टू जनरेट लीड्स विद एआई. Hmm. ये नहीं था, दिस वाज नॉट देयर, एंड आई बैंग ऑन सेड टू माय फ्रेंड्स एंड peers कि लिसन, दिस गाय हैज गिवन वैल्यू एंड ही इज टोटली वर्थ द अमाउंट इज स्पेंडिंग. Hmm. एंड आई सेड टू एवरीवन आउट देयर. ठीक है, मेरे को 10 लोग एजेंसी ओनर्स मिलेंगे, 10 लोगों को मैं बोलूंगा कि भाई तू ये वेबिनार कर, तेरे को पूरा वैल्यू मिलेगा. Makes sense. So you mean to say that when you saw that your cost, the payment to value ratio was high, at that time you felt like this is the thing I should go for compared to any other thing that you were looking out for. Apart from that, I was not thinking about just money. ठीक है, to be honest, money was of course a factor at a point in the head कि when it comes to really high ticket, but then I was looking कि what kind of value or maybe things I can do after this. Hmm. They say, for example, if I take KGMM as an example for myself, okay, it was not just the 3 day event for me. Okay, there were other 7 webinars lined up. Okay, only for example, if I'm paying you 6,000 for that webinar, okay, and I'm getting out of 7 webinars, that means I paid almost around Same 850 rupees price. per webinar. Okay, Hmm. and I'm getting so much value out of it, Hmm. and no upsells regarding Hmm. anything. ठीक Hmm. है, आई एम गेटिंग फुल पैक. उसके बाद मेरे को एट द एंड में आप बोलो कि यार 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, Hmm. एंड देन यू गिव एन अपसेल. व्हाट इज द हार्म? Correct. बट आप अगर एक काम करो कि हम पूरे 3 घंटे अपसेल मार रहे हैं तुमको, ठीक है, हम वैल्यू नहीं दे रहे, बल्कि तुमसे पैसे ले रहे हैं, दिस इज नॉट द केस, दिस शुड नॉट हैपन. दिस इज रियली Because अटर. I remember like yeah, I sat till night 2 2 2:30 just to answer Yes, everyone's question. Because the real motive for us is not to extract money. We know the money will come. It's only if we can give value. If one statement of mine can change someone's life or make them get an extra client, then money will not be never be an issue. exactly. Got it. So that was something that made my mind कि यार नहीं. Got it. Uh, there are some people in your batch who have not got as fast result as you, and they're like, यार पूछ के जल्दी हो गया, मेरा नहीं हुआ है. दो अभी तो तीन हाँ, 5 हफ्ते 6 हफ्ते हुए होंगे आपके भी, 12 हफ्ते भी कंप्लीट नहीं हुए. बट इट्स लाइक यार पूछ के जल्दी हो गया, मेरा नहीं हुआ है. सो दैट्स टेंशन ऑफ ही इज डूइंग फास्ट. व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल हु हैव नॉट गॉट रिजल्ट एज फास्ट एज यू? उनको रिजल्ट आएगा, मेरे को श्योर है, बट हाँ. हाउ डू दे गेट इट फास्ट? लाइक व्हाट्स योर एडवाइस टू देम? सबसे पहले डीएमएल. ठीक है, आई एम श्योर कि आप लोग कहीं ना कहीं सही में अपना दिमाग लगा रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मत लगाओ. ठीक है. सेकेंड थिंग इज ट्रस्ट द प्रोसेस. थोड़ा स्लो हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई सबके लिए मेरे जितना फास्ट हो, थोड़ा ऊपर नीचे स्लो वो होगा. ठीक है, बट वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स ना, यू विल आल्सो बी मोटिवेटेड. इट्स ऑलवेज लाइक दैट स्नोबॉल इफेक्ट. आई विल बी ऑनेस्ट, दिस इज ऑलवेज अ स्नोबॉल इफेक्ट कि तुम्हारे पास एक क्लाइंट क्लोज हुआ ना, यू नो कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते रहेंगे. ठीक है, यू कैन टेल द क्लाइंट कि देखो ये कल प्रूफ दिखा सकते हो कि भाई देखो मेरे पास पैसे कल ही आए हैं, देखो ये बंदे ने दिए, आप भी दे सकते हो. ठीक है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, आप भी दे सकते हो. वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ यार. बहुत बहुत मुश्किल होता है खुद में बिलीव करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप दूसरों में बिलीव नहीं कर पाओगे, बट खुद में रखो कि तुम कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज हैड दैट ट्रस्ट इन मी कि पीयूष तू कर लेगा. ऑफकोर्स एक टाइम लगता है कि यार नहीं यार छोड़ दूं, बट नहीं, देन यू शुड गेट अप द नेक्स्ट डे एंड बी लाइक कि नहीं, आज नया दिन है, आज उखाड़ेंगे हम कुछ.
very simple. Hmm. And I really suggest same thing with you कि please वही follow करा and you will see results in no time. मैं भी आपके साथ ही था आई हैव सीन नो रिजल्ट फॉर थोड़ा टाइम एंड देन एकदम से पूरा रिजल्ट्स. Hmm. ठीक है. तो इट्स ऑलवेज देयर एंड आई रियली आस्क यू टू ट्रस्ट द प्रोसेस. Lovely, lovely. What's your advice to people who are watching this video, which are majority people who are not part of ICEx, and they're feeling कि यार join करें नहीं करें, सही है कि नहीं है, बंदा करा पाएगा नहीं करा पाएगा, all these things. What is your opinion to or advice to those people who are watching this video and not part of ICEx? गाइस सबसे पहली चीज अगेन आई मेंशन DML दिमाग मत लगाओ जाओ चेक द KGMM राइट अवे. ठीक है. 3 दिन का इवेंट. Understand what it is. ठीक है. What is the value you're getting. See what is in it for you on the long run. ठीक है. अगर आपको 3 दिन में इतना वैल्यू मिल रहा है so say think कि 3 महीने में कितना वैल्यू मिलेगा and it's a lifetime thing. Again, you're a part of a community with almost around 150,000 people जहाँ पे you will be a part of people with a HNI सबसे पहले. ठीक है. HNI नेटवर्किंग सबसे बड़ी चीज है यार. आज की डेट में नेटवर्क करोगे तुम लोग. Secondly, you will be a part of community who are always growing and contributing towards the economy and the growth and development of India. So that is the second thing. Third thing, you will be in the part of circles where you're constantly growing and evolving yourself. How has the community helped you? Like, where did the community part came in? The community part came in the beginning. Okay, I'll tell you. So there were a couple of people that I connected with. One was Nikhil, who came in the month of October, I guess November itself. I connected with him. I connected with Anjali. I connected with Richa. So Anjali was a healer and a coach. So we got connected on that terms. Richa was doing something as called as service dropshipping, which was again something towards my industry, and she needed some help, and I helped her. There's other few people that we're talking to, and that's how community is. Like you should always be a part and interactive part of the community. ऐसा नहीं कि यार शांत बैठे हो. शांत बैठने से कुछ नहीं. कोई आगे तुमसे नहीं पूछेगा कि भाई पीयूष भाई कैसे हो. आप जाके पूछो कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. How is your funnel performing? How is your business performing? What are the problems you're facing? If I can help you with anything. Simple. Got it. And just being part of, being friends with 3 people, 4 people, you start connecting with 30, 40, and then you have like a whole community standing with you. Exactly. It's always growing. Makes sense. Completely makes sense. Like, Piyush, last question. Where these people can find you? If someone wants to connect with you, where they can find you? So first of all, you can find me on Instagram. That is at socioez, SOCIOEZ. And second, that is on my website, www.socioez.com. You Lovely. can book a slot, anything. Lovely. All the people who are watching this will put the links in the description. You can check out Piyush for his services, performance marketing, and funnel building, as well as you can also reach out to him regarding to talk about ICEx. All the links would be in description, and you can reach out from there to Piyush. Thank you so much, Piyush, for coming over here, giving the valuable nuggets to our audience. Thank you it was so much. wonderful having you, and I want to see you very, very soon Yes. with multiple lakhs and very crores. Thank you so much, Himanshu. This was lovely being a part of this community. Thank you so much. अगर ये इस टाइप की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब मत करो. Click on my channel, see all the videos. If you feel like there are videos which can actually help you, then so click the subscribe button and hit the bell icon for the notifications.